Boron exists in different allotropic forms. All the allotropic forms contains uh, icosahedral units, which would have 12 corners, 20 faces with boron atom at the 12 corners, and all bonds are equivalent. Calculate the uh, heat evolved at constant pressure of boron atom undergoing the above change if the bond dissociation enthalpy of BB is 300 kilojoules per mole. Okay, calculate the heat evolved at constant pressure of boron undergoing the above change. Right. See, it is like this. You have total how many? 12 borons. So 12 borons are being converting into B12. In this heat will be evolved. Okay, and we have to calculate how much of this heat is evolved given the number of given the bond dissociation energy. Okay, beta. Okay. Mhm. Now, if you check out on the right hand side based on the structure, correct, there are total of 12 borons, and every boron is connected with three bonds, right? Three other borons, if you check out properly. Okay, Yes. which means we have to uh, and breaking each bond we require 300 kilojoules per mole of energy, right? So if you write this delta H in terms of bond dissociation energies, then here this 12 borons here, considering all of them are atomic forms, then here there is no energy involved. But here, every boron we have, in case of B12, we will have how much amount of energy here, beta? This is BB of how many bonds? There are 12 borons here, and every boron has three atoms. I mean, three connections on it. Clear? Okay. Yes, clear. Okay. So therefore, that would be equal to, this is 0 minus bond dissociation energy of boron and boron is 300 into 3 into 12, because we have to break so many bonds. 1, 2, 3. 1 second, let me check the bonds we have to break. Let me check icosahedron once. Right. In icosahedron boron, if you see the structure properly, beta, one boron is connected with one, two, three, four, five other borons. If you see properly, okay. See the image. You have image in front of you, no? Yes, I have it. Right. So you can see one boron is trying to make five other bonds. So same way, if you see the other boron also, how many borons are actually shared with it, if you check it out, because one bond is shared by other atoms also, right? Correct. So you just count the total number of edges. Okay. Okay. Huh.
So if you count the total number of edges, how many? Because we have to break so many edges, right? Yes. How many edges we have? Uh, Out of 12 corners, yeah, 12 corners and 20 faces, number of edges. Check. Yeah, count it because it is like 12 is every carbon, I mean every boron. If you count all the edges here, there are 30 edges, beta. Got it? So not Okay. 36 because out of which there will be some common factors also. Total 30 Okay. edges are what you are getting. Okay. So these Yeah. many boron bonds we have to break, and every boron bond requires this much amount of energy. So how much amount of energy is released here? Okay, 9,000 joules of energy is released here. Clear? Okay. सर पर वो आंसर ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन पे बहुत ही कम आंसर्स है, लाइक 500 750. Mhm. Calculate the heat evolved at constant temperature in kilojoules per mole. ये भी kilojoules ही दिया है 9,000. Aliphatic form. All aliphatic form contains icosahedral units. Boron all 12 corners. Calculate the heat evolved at constant temperature. ऑप्शंस कुछ गड़बड़ किया बेटा उसने, क्योंकि इतना कम तो आएगा ही नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि इतने बॉन्ड्स तोड़ने हैं। तो हम्म. आपको मिनिमम इतना एनर्जी तो लगेगा ही। सिर्फ 300 500 ये सब तो गलत ही है। ठीक है, इसको ऐसे बाजू में रखो, आई विल चेक आउट व्हाट इज मिसिंग इन इट मीनवाइल। ठीक है, बट Okay. आंसर तो ये, डोंट वरी। Okay. 54th. Butane exists in various conformations in nature. At any given instance, the probability that given butane molecule is in its anti-eclipsed form are given if molar enthalpy of combustion of N-butane is minus 690 kilojoules per 25 degrees. Then calculate the enthalpy of combustion of butane if all the butane molecules are in Gauss conformation. The potential energy of Gauss form is 2 kilojoules per mole higher than anti-form, but it is 3 kilojoules less than the eclipsed form. ये अभी हम लोग कल ही पढ़ने वाले हैं, आज ही पढ़ने वाले हैं। ओके, सो कीप इट वाइल फॉर नाउ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा एंटी गॉश एंड एक्लिप्स्ड उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, तो इट विल बिकम इजियर। ओके, अच्छा ठीक है. नेक्स्ट 55. For an ionic solid mx2 where X is monovalent, the enthalpy of formation of solid from M solid and X2 gas is 1.5 times the electron given. This is the enthalpy of formation of solid M to 1.5 times the electron given enthalpy of X. Okay, पहले लिख लेते हैं formation of this, that is metal solid plus X2 gas is becoming mx2 solid. For this formation, let me call it as
delta x as x, delta h as x. Next, uh, m, this is 1.5 times electron gain enthalpy of x gas plus 1 electron is giving x minus gas. This is delta x is equal to y. Next, the first and second ionization of metal M solid becoming M plus 2 electrons. Let this be first and second electron are 1.2 and 2.8 times that of sublimation times of enthalpy of sublimation of Ms. Okay, let this be Z and M solid converting into M gas. This is gas. Sorry, this is also gas. To M gas is delta H of sublimation, right? So which I'll call it as some P, let's say. The bond dissociation enthalpy of X2 to form of X2, enthalpy of X2 is 0.8 the 2 times of X gas delta H is equal to some Q. Of first ionization is 0.8 times the first ionization of the metal and it is equal to 1/5 the magnitude of lattice. Okay. M plus gas plus 2 times of X minus gas is becoming mx2 solid. This is delta H of lattice. Let this be R. ठीक है, सारे टर्म्स मैंने लिख दिए जो जी दिया था. ओके, सो ठीक है. सबको एक एक को भी रिलेट करते जाएंगे. इन सब में रिलेशन क्या क्या है. ठीक है, सो अभी फर्स्ट रिलेशन फिर से आते हैं. फर्स्ट, enthalpy of formation of solid from this is 1.5 times that of this. So first equation आया हमको x is equal to 1.5 times that of y. Equation 1. Okay with the next. Okay. Uh, the first and second ionization of enthalpy is 1.2 and 2.8 times that of sublimation of Ms. Okay. So IE1 ionization 1 is equal to 1.2 times that of sublimation here. Sublimation कौन सा है P and ionization 2 is 2.8 times that of sublimation energy. 2.8 times that of P. Done. Next, let this be equation 2. Next, we have bond dissociation enthalpy of X2 is zero point 0.8 times that of first ionization of metal. Right. Next, bond dissociation enthalpy is Q. Q is equal to zero point 0.8 times that of first ionization enthalpy of metal. First ionization enthalpy of metal is how much? 1.2 times of P. So it is 1.2 times of P, right? 0.8 into 1.2 enthalpy of metal and it is equal to uh, X2 is zero point 0.8 times that of first enthalpy of metal and it is also equal to 1/5 of magnitude of, right? So this is also equal to 1/5 of magnitude of this one, which is R, magnitude of R, enthalpy of lattice. So if electron gain enthalpy is minus 96, then what is the enthalpy of sublimation of the metal? So we need to calculate what is the enthalpy of sublimation of metal. That is, we need to calculate P beta. Okay. Okay. हमको डेटा में क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो मैं भी लिखते जाऊंगा. That is, this is given. Electron gain enthalpy is given as minus 96. This much is the amount of released energy is. Okay. Okay. So y is what is given. So हमको क्या क्या पता चल रहा है देखो. X is equal to 1.5 times that of y. Correct. Now X is a total amount of energy here.
Clear? That is Yes. the enthalpy of this entire thing. So this is one thing we know. 1.5 times that of 96. This is x we know. Okay. Now, how do we relate this x with the overall equation? Check it out. In सबका sum, this is a Born-Haber cycle. So we need to add all of the terms and for x2 also so that we can get mx2. So mx2 लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले मेटल को सब्लिमेट करना पड़ेगा. So we have to add the energy P, correct? After that, we have to add ionization 1, ionization 2, plus dissociation of this metal. Dissociation is given already, which is how much Q. This is also required energy. Plus, after that, this much amount of energy is required. Ionization हो गया, sublimation हो गया, electron affinity हो गया. Then finally, we have to add this R to get this as X. Have you understood? सर आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहाँ पर लिखा? Electron affinity 1, 2. क्यों? हाँ, electron affinity नहीं लिखा. Plus Y plus R is equal to X. ये हमको पता है, right? सर +2y होगा ना, 2x है. नहीं, ये एक X का ही उसने डिसोसिएशन दिया है, देखो. हाँ. ओके. ओके. x2 to 2x का ही x दिया है उसने, मतलब q दिया है उसने. ठीक है. Now I could relate all of them. See, convert everything in terms of p only because we need p only, right? Correct. यस. So यहाँ पे देखो, p तो p वैसे ही रखते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी को ऑलरेडी हमने p में रखा है 1.2 टाइम्स ऑफ p प्लस ionization potential, this is 2.8 times that of p. Next, q is already in terms of p, so p, 12 8s are 12 8s are 106. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.06, राइट बेटा? दैट हाँ. इंटू पी, ये क्यू बी हो गया, प्लस वाई. ओके. अभी आप y को चेक करोगे तो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, प्लस आर. आर भी रिलेटेड है इसके साथ में. हाँ. सो आर इज इक्वल टू 5 times of 1.06. Yeah. So how much we will get this as 5.13, right? Sorry, 5.30. Hmm? So ओके. 5.30 times that of p. ये भी हो गया. That whole is equal to uh, this x is 1.5 times that of minus 96. Done बेटा. ओके. Okay. अब ये ध्यान से रखना कि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है. ओके, ये दोनों मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, बट ये जो एनर्जी है ना, एक्चुअली में रिलीज एनर्जी होता है. हाँ. करेक्ट. सो विच मीन्स दिस 5.3 into p is actually released energy. This has to be negative. ओके. ओके. सो ये दोनों रिलीज एनर्जी है, बस अभी इसको p में कैलकुलेट करना है. चलो देखते हैं कितना आ रहा है. सो दिस इज 4, करेक्ट, एंड प्लस 1 5. So I'm getting this as 5p plus 1.06p, which is 6.06p, minus 5.3p is equal to 1.5 into minus 96 plus 96. Okay, beta. So this goes as 0.76p is equal to uh, इसमें से 0.05 into p 96, correct. So p will be equal to 0.5 into 96 with minus, मिनट, माइनस में क्यों आ रहा है?
एक बार सारे वैल्यूज फिर से चेक करते हैं। पी है दिस प्लस 1.96। क्यू क्या था बेटा? क्यू भी रिक्वायर्ड एनर्जी है। वाई इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। वाई इज दिस इज रिलीज एनर्जी। वाई इज हाउ मच गिवन? सर इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स गैस दिया है और आई थिंक उसमें 2 होना चाहिए, मतलब व्हाइल वी वर कैलकुलेटिंग इट शुड बी 2। हाँ सर, वाई 2 श्योर। होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम्स ना, राइट, सॉरी, इंटू टू। तो वो पॉजिटिव हो जाएगा आरएचएस। इंटू टू, इंटू टू, राइट। तो पॉजिटिव 0.5 हो जाएगा। सो 0.5 इंटू 96, दैट होल डिवाइडेड बाई माइनस 0.76। चेक कर लेना एक बार। हाँ सर, बराबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? सर वो फर्स्ट वाला। Which of the following gas possesses the largest internal energy? 2 moles of helium gas occupying 1000 liters at 300 kelvins, नहीं 56। सर, बस इसमें एक कॉन्सेप्चुअल डाउट था कि हम लोग हर गैस में 3/2 RT नहीं लगा सकते नहीं, कि। 3/2 सभी लगाएंगे तब वो मोनो एटॉमिक हो। अगर डायटोमिक है तो 5/2, अगर पॉली एटॉमिक है तो 7r/2। ओके, तो हम लोग हर बार जब गैसेस के सम सॉल्व कर रहे थे वी वर अज्यूमिंग दैट इट वाज अ मोनोएटॉमिक गैस, राइट? नो, हम लोग कभी अज्यूम नहीं किया, वो सिर्फ गैसेस स्टेट तक अज्यूम किए थे हम लोग। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब अप्लाई कर रहे थे, वी अज्यूम्ड एवरीथिंग इज मोनो एटॉमिक। अच्छा, ओके। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हमेशा we have to play it consciously, like whether it is mono or di, depending upon the molecule only we have to judge that. Okay. हम्म। सो फिर सिक्स। Sixth. So that was sixth one. एक मिनट बेटा, स्टक हो गया वो व्हाट्सएप। ठीक, मैं मोबाइल से चेक करता हूँ। So yes, sixth. Okay, got it. The work involved in an isothermal expansion of n moles of an ideal gas from initial pressure of P. Okay, initial pressure of P to final pressure of 1 atm in the number of steps such that every step the constant pressure exactly 1 atm less than the initial pressure of the gas is maintained is given by how much? Okay, so ये समझना है कि पहले तो ये इरिवर्सिबल है क्योंकि आप हर एक डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हो। ठीक है बेटा, हाँ। करेक्ट। यस। So work irreversible will be equal to minus P external into V2 minus V1। ये हमको पता है, हाँ। करेक्ट। तो अभी चेक करना,
uh, initially pressure of P ATM to final pressure of 1 ATM in number of steps. Okay, so one isothermal expansion of n moles from initial pressure of P ATM to final pressure of 1 ATM in number of steps such that in every step the constant pressure is exactly 1 ATM less. Okay, right. एक तो हम लोग को वॉल्यूम टर्म्स में कुछ भी नहीं दिया है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर दिया है, बराबर बेटा। तो Yes. मैं इसको लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एन आर टी बाई पी टू माइनस एन आर टी बाई पी वन। ओके, Okay. एंड दिस एन आर टी वुड कम कॉमन। सो एंड आपको ये पता है कि एवरी टाइम प्रेशर वुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर, पी एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर, करेक्ट। Okay. सो आई कैन राइट दिस एज एन आर टी, बाहर लेके आ जाऊंगा विथ माइनस साइन। सो दिस विल बी पी एक्सटर्नल बाई पी टू माइनस पी एक्सटर्नल बाई पी वन, okay, Okay. which is equal to minus nRT by, see, every step the final pressure will always be equal to external pressure। वहां पे रुक जाएगा, फिर से आप ओपन करोगे, करेक्ट, फिर से आप Yes. प्रेशर को चेंज करोगे, फिर से आप ऐसे ओपन करोगे। So what do we get here now? So final pressure will always equal to 1 minus P2 by P1। So this is the situation every time। Yeah। Yes. अभी जितना अमाउंट ऑफ इनिशियल प्रेशर है उससे एक 1 एटीएम कम होते जा रहा है एवरी टाइम, राइट। ऐसा होते Hmm. होते इवेंचुअली वो 1 तक जाएगा, करेक्ट। हाँ. So therefore, work total will be equal to work in step 1, work in step 2, work in step 3 and so on, plus some n number of steps हम लोग ले रहे हैं, सोचो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में एन आर टी इंटू वन माइनस पी वन माइनस वन बाई पी वन, ये हो रहा है वर्क। हाँ. नेक्स्ट, तो ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अच्छा ये माइनस में कॉमन ले लेता हूँ सब में, ठीक है, प्लस एन आर टी इंटू वन माइनस वन माइनस, ये कितना हो जाएगा, पी वन माइनस टू डिवाइडेड बाई पी वन माइनस वन, बिकॉज फिर ये अभी इनिशियल प्रेशर और एक 1 एटीएम कम हो गया ना Okay. हाँ. इसका इनिशियल प्रेशर, अभी इसका ये माइनस टू हो जाना चाहिए, करेक्ट। हाँ. तो ऐसे ऐसे जाना चाहिए। तो ये देखना इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ एन आर टी कॉमन ले लिया सपोज, तो इसको लिख सकता हूँ वन माइनस वन बाई पी वन, राइट। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, हाँ. तो ये वन वन कैंसिल ही हो रहा है ना। हाँ. तो ये सिर्फ बच रहा है वन बाई पी वन के टर्म्स में, राइट। ओके, Yes. तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा एज माइनस एन आर टी, कॉमन आ जाएगा, और वन बाई पी वन बच रहा है, प्लस सेम यहाँ पर भी देखो, ये अगर मैं पी वन माइनस वन करता हूँ, ये पी वन माइनस टू करता हूँ, फिर से सब कैंसिल होकर वन बाई पी वन बचता है, पी पी माइनस वन बचता है। Yes. सो देयर फोर इट विल बी वन बाई पी वन माइनस वन, राइट। तो ऐसे जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन बाई पी वन माइनस टू, वन बाई पी वन माइनस थ्री, यही होते जाएगा। हाँ. ऐसे कुछ एन नंबर ऑफ स्टेप्स मिलेंगे, करेक्ट। अच्छा, एन नंबर ऑफ डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए अपने को, क्लियर। सो Yes. फाइनली कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, ओके, जाते जाते आपका फाइनली यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने होने चाहिए, फाइनल प्रेशर वन होना चाहिए, तो ये टू होना चाहिए ना, correct? तभी जाके वो एक स्टेप कम होगा उससे, क्योंकि हर स्टेप में एक 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 एटीएम कम हो रहा है। सो इट शुड Okay. बी हाँ. फाइनली वन बाई टू, राइट। नहीं वापस समझा सकते हो. ये ऐसे जाते जाते finally where is it reaching, it is reaching to 2 atm, so that the final atm has to be 1 atm, correct।
ओके, वैसे हाँ। क्योंकि 1 एटीएम कम होना चाहिए ना इनिशियल से, राइट? हाँ। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, करेक्ट? सो देयरफॉर दिस विल बी माइनस nRT इनटू 1 बाय nRT तो आ गया कॉमन। अब इसको एक समेशन की तरह लिख सकते हैं हम लोग, हम्म summation of, okay, I is equal to 1 to I is equal to p minus 1, right? हम्म Where this would be 1 by p plus 1 था इनिशियली, उसमें से माइनस आई होते जा रहा है हर बार हम्म ना, यही हो रहा है। हाँ। क्योंकि 1 डालो तो ये 0 होगा पहले, ये आ जाएगा। फिर से 2 डालो तो p माइनस 1 होगा, 3 डालो तो ये आ जाएगा 4, फिर फाइनली इवेंचुअली p माइनस 1 पे आना चाहिए, p माइनस 1 से 2 आएगा ये, करेक्ट? आई लास्ट यस। में p माइनस 1 डालो तो 2 आएगा ना, हाँ आएगा। ये वर्क डन टोटल हो जाएगा, डन। डन। सर, व्हाई डिडंट यू कंसीडर प्लस 1 by 1? क्योंकि वो भी पार्ट होगा ना। प्लस 1 by 1 मतलब 1/2 के बाद। 1/0 हो जाएगा ना बेटा, मतलब प्रेशर ही नहीं है फिर, तो फाइनल प्रेशर दिया है 1 एटीएम, देखो क्वेश्चन में दिया है ना, मतलब हाँ, सिंगल बट प्रेशर 1 फ्रॉम एटीएम हो जाना चाहिए, देखो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टू एटीएम टू 1 ATM, तो उसका भी पकड़ना पड़ेगा ना। किया ना, यही तो है। इनिशियली 2 एटीएम था, फाइनली 1 एटीएम। अच्छा, ओके। ये P2/P1 है ना, P2 इज हाँ। फाइनल, P1 इज इनिशियल, है ना? हाँ। सर फिर 11। The heat capacity of 25 degrees centigrade should be close to, at 25 should be close to for all the given elements except, okay, एल्यूमिनियम से लेकर, करेक्ट, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक, ओके, ओके। जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं उनमें एक पैटर्न पाया गया है, करेक्ट? हम्म दैट इज दैट इज checked by DeLong Petit method, DeLong Petit method, got it? हम्म This is an empirical method. Empirically, it has been observed that the molar capacity of most metals is found to be 6.4 calories per mole per kg per mole. ये पहले हम जेई सिलेबस में था भी नहीं है, okay? ओके। So this is what you usually used to get, okay? ओके। So this, if you write in terms of I think joules, ये around 28 या 27 कुछ आ जाएगा, joules per Kelvin per mole, हम्म okay? So ये सब है ना, वैलिडिटी मेनली मेटल्स के लिए था, और नॉन मेटल्स विच हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर लाइक बोरॉन, ठीक है, सॉरी नॉट लाइक बोरॉन, लाइक आयोडीन, ऐसे केसेस में भी ये वैलिड था, ओके? ओके। तो अभी इनमें से चेक करो, लॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस, what do we have tungsten, platinum, then we have strontium, right? हम्म Which of the molar heat should be close to 27 for all the metals except, yeah, except कौन सा बेटा, neon ना, neon is not a metal, ओके, गुड। ठीक है? नेक्स्ट सर 10 भी करना था। 10th, okay. In a certain polytropic process, the volume of argon was increased 4 times. Simultaneously, the pressure decreased 8 times. सर इसमें वो पीवी रेस टू एक्स करके ही करना था ना। हाँ बस बस। ओके, फिर हो जाए। अ, फिर फिर 23rd and 24th।
3rd and 24th. If all the degree of freedoms for three-dimensional n gaseous molecules are excited, then Cp by Cv. Okay. नॉर्मली हम लोग एक्साइटेड स्टेट में रहता है, सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है तो वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन जीरो लेते हैं. यूजुअली वी हैव ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, राइट बेटा. We Okay, usually yes. do not take vibrational at normal conditions, only at excited conditions or very high temperature पे लेते हैं हम लोग. Okay. Okay. Suppose there are n number of atoms, we will Hmm. have 3n total degree of freedoms. Degree of freedoms. ठीक है. These many Okay. degree of freedoms we will have. Now the question asked is what will be the Cp and Cv value, right? Okay. 3n में से 3 तो इसके चले जाएंगे, 3 इसके चले जाएंगे, बाकी बचे रहेंगे 3n-6, करेक्ट. हाँ. ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं. ओके. और यूजुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, Cp बाई Cv वैल्यू चेक करना है हमको उतना, राइट. Hmm. Cv वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले. Cv वैल्यू is about contribution from all of these segments. क्लियर. और Hmm. इनका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, देखो इसका कंट्रीब्यूशन होता है R/2 एनर्जी वाइज कंट्रीब्यूशन. ओके. Okay. इसके लिए तो हम लोग 3R/2 लिखते हैं ना. हाँ. और इसका भी होता है R/2, बट इसका होता है R. क्यों ऐसा होता है, देखो दो एटम के बीच में अगर आपको वाइब्रेशन बनाया जाए, करेक्ट, एक Hmm. वाइब्रेशन के लिए इसको भी क्लोज आना पड़ेगा, इसको भी क्लोज आना पड़ेगा, है ना. हाँ. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एटम जाके इसके क्लोज जाएगा, दैट इज नॉट कॉल्ड वाइब्रेशन, करेक्ट. Hmm. जैसे ताली बजाना, ताली बजाना इस लाइक दोनों हाथ को सेम एनर्जी से लेके आना पड़ेगा ना, हाँ. तभी वो वाइब्रेट हो पाएगा. मतलब इसका भी कंट्रीब्यूशन R/2 होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन R/2 होगा. क्लियर है. Okay. सो जब हाँ. वाइब्रेशन होता है ना, तो R/2 प्लस R/2 कितना हो रहा है, R हो रहा है ना. सो कंट्रीब्यूशन हमेशा R होता है, नॉट R/2. ठीक है. सो इट इज लाइक 3R/2 प्लस 3R/2 प्लस 3n-6, 3n-6 into R and not R/2. समझ में आया. Okay. हाँ, This समझ will आया. be C. So this will be how much? 6R/3 plus 3nr minus 6r. ठीक है. So ये 6R/2. 6R/2, हाँ सॉरी, 6R/2. तो ये हो गया 3r माइनस, तो -3r हो जाएगा प्लस 3nr. सो ये हो Hmm. जाएगा 3n-3 इंटू आर. R. ये हो गया. सो सी पी कितना हो जाएगा, सी पी विल बी सी वी प्लस आर. सो इट इज 3n-3r plus r. So it is 3n minus 2r. Correct. So Cp by Cv, if you check it out, so 3n minus 2r by 3n minus 3r. ये आ रहा है. Hmm. तो इसको हम लोग अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3n-3r प्लस Plus R. r बाई 3n-3r डिवाइडेड बाई 3n-3r, बराबर. ये Hmm. हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 3n-3r और 1 प्लस 1 बाई 3. एक आर किधर गया, और एक आर रहना चाहिए ना. अरे हाँ, इधर आर हाँ. N के साथ R. मैं देख रहा हूँ, आर कैसे कैंसिल नहीं हो रहा है. आर भी तो है इधर, राइट, ठीक है. Hmm. वो आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमको, 3n-3 बचा. Okay. डन. हाँ. Understood. नेक्स्ट कौन सा. 24th. हाँ. 1 mole of an ideal gas undergoes a reversible process. T is equal to T naught plus alpha V, where T naught and alpha are constants.
if its volume increases from V1 to V2, then amount of heat transferred is how much? Reversible process. Amount of heat transferred is how much? इसमें कोई प्रोसेस बताया नहीं, ये तो एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जैसा हो गया। सो अभी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कैसे हीट ट्रांसफर चेक करना है। ओके ओके, लेट्स सी। एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? सी एम इज इक्वल टू नॉर्मली सी वी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स, सॉरी Yes. माइनस माइनस, ओके ये लिखते हैं हम लोग। Hmm. सॉरी एक्स माइनस वन ना, एक्स माइनस वन, Hmm. तो ये बराबर है, से हमको फायदा नहीं हो रहा है। हमको टी टर्म्स में चाहिए। This is PV power x is equal to constant. TV raised to power of x minus 1 is equal to constant. T into T naught by T naught T2। ठीक है, ऐसा थोड़ा लंबा पड़ रहा है ये सारे फॉर्मूला अप्लाई करने से। हम लोग इनिशियली यहाँ से जाते हैं। When you write Cm is equal to Cv. Normally, how do we write this heat capacities, beta? Du is equal to dq plus dw, right? This we can write that Yes. Cv dt is equal to n Cm dt plus p into dv minus, right? Hmm. Yes. लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाए टर्म्स को। तो एन एन यहाँ पर कॉमन निकाल दो, डेल्टा टी। अच्छा, ये पी वी, पी डेल्टा वी को हम लोग डेल्टा टी के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हियर, राइट? तो हम Yes. लिख सकते हैं वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी। दिस वी कुड राइट, Hmm. we can write p d v as in fact minus p d v as v d p minus n r d t, okay? Hmm. This we could write VDP minus NRTT. इससे भी हमको फायदा नहीं होगा। डायरेक्टली हम लोग P लिख देते हैं, P के टर्म्स में लिख देंगे यहाँ पर। CV, let me write this 1 second, CM dt, CM dt is equal to CV dt plus P by N dV, right? So Hmm. CV dt plus P by N dV। अब ये P बाई एन डी वी को मैं डी टी के टर्म्स में लेकर आके डी टी कैंसिल कर दूंगा, दैट मेक्स इट मोर इजियर, ओके? Okay. सो वी नीड टू गेट एन इक्वेशन वेयर डी वी इज रिलेटेड विथ डी डी टी, ओके? Okay. हाउ वी कुड डू दैट? वी कैन राइट दिस एज P into V is equal to nRT, correct? Hmm. If we differentiate this with respect to dt, okay, if we Hmm. differentiate with respect to dt, I would get this as
mm, VdP plus PdV is equal to NR. Okay. Okay, let me put at constant pressure once. At constant pressure, I can write this as P by N. Uh, this is by dt. With respect to dt, if we do this, let me differentiate with respect to constant temperature. So I'll get this as nr. So P by nr is equal to into dV is equal to dt. So therefore P by n into dV is equal to n dt. This is what I will have. Okay. So suppose if at all I just take it at constant pressure and I'm just checking what we can get. So I will get this as R dt here, R into dt is what I'll get. So we'll get this as R into dt. So this will get cancelled and that's how we'll get Cp, correct? Yes. P, I could write this as N. और if we divide the whole thing by dt, then I think कुछ relation आता है क्योंकि t equals to t naught plus alpha v. तो वो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dt by dv का कुछ रिलेशन आना चाहिए हम्म, एक और मिनट फिर बेटा, उसके एक मिनट बाद वॉशरूम जाके दो
Yeah, no, there. Yes, sir. Okay, let's see this once again. P सर ये by इतने n. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में? नहीं बेटा, okay. आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में बहुत बेसिक चीजें इसी फॉर्मूला बेसिस पूछा है अभी तक जी। एनीवेज थोड़ा करने में हार्म नहीं है। इसको हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ना बेटा, हम्म। we will no I mean using ideal gas we can use this one tv raised to power of x minus 1 is equal to constant फिर यहाँ पे डिफरेंशियल कर लेते हैं। ओके। तो this would give a better idea about how dv and dt to be related। हम्म। तो v raised to power of x minus 1 into t एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लस t into v raised to power of x minus 2 sorry x minus 1 into v raised to power of x minus 2 into dv by dt, correct? That is equal to constant। so क्या आ जाएगा हमको 1 plus t into v raised to power of x minus 1 I mean x minus 2 into dv by dt is equal to 0, राइट। तो यहाँ से हमको आ जाएगा tv raised to power of x minus 1 लिखता हूँ ये डिवाइडेड बाई v हो जाएगा हम्म। into dv by t is equal to 0, हम्म। dv by dt is equal to 0 sorry is equal to -1 -1 ही आ रहा है। इसमें ऐसा लिखने का कारण यह है कि हम लोग पीवी और एन को रिलेट कर पाएंगे। तो डीवी बाई डी टी मैंने डिफरेंशिएट सही किया ना, एक बार चेक कर लो। वी माइनस एक्स डिफरेंशियल टी वी और टी कांस्टेंट एंड वी रेज टू पावर ऑफ एक्स माइनस वन, सॉरी ये एक्स माइनस वन होगा ना, सॉरी एक्स माइनस वन होगा, एक्स माइनस वन इंटू वी रेज टू पावर ऑफ एक्स माइनस टू, करेक्ट। सो x माइनस वन यहाँ पर होगा तो वी कैन राइट दिस एज v, यहाँ पर डिवाइडेड बाई v लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो वन प्लस टी इंटू एक्स माइनस वन बाई वी इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आई मीन इंटू टी बाई वी इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, right? So ओके। from here we can relate TV. Okay, check this out. I can write this x minus 1 to the right hand side. So I'll get t by v into dv by dt is equal to minus 1 by x minus 1, right? So ओके। यहाँ से tv t by v को हम लोग लिख सकते हैं p by n, right? Because pv is equal to nrt, हम्म। right? So p by n को हम लोग लिख सकते हैं rt by v, okay? यस। तो सिर्फ एक आर मिसिंग है, यहाँ पर आर लिख देंगे तो पी बाई एन को साथ में लिख सकते हैं हम लोग, राइट। ओके। सो दैट्स हाउ वी यूजुअली सब्स्टिट्यूट हियर। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू द डेरिवेशन, इसी तरीके से हमने डिराइव किया था। तो हम्म। इसी डेरिवेशन में कहीं हमको ये टर्मिनोलॉजी यूज करना आना चाहिए बस, ओके। सो हम लोग ये लिख सकते हैं सी वी प्लस एन बाई आई कैन राइट दिस एज पी इंटू डी वी बाई डी टी p इंटू डी वी बाई डी टी या dv बाय अभी ये n n where is it dv by dt yeah I can just substitute this here as dt। तो ये देखो ये dt को इधर लेके जाओ, ये क्या हम्म। मिल रहा है tv by dv is equal to minus dt by
tv by dv is equal to minus dt by x minus 1, Hmm. and t by v can be written as p by nr into dv is equal to minus dt by x minus 1, Yes. and p by n dv is equal to minus r dt by x minus 1. Yes. That's how we usually write it here as minus r dt by x minus 1. Okay, Okay. that's how we usually get it. And then we remove out this dt and we'll get the equation here. Okay, Hmm. now let us try to use this term which is given to us. The term which is given to us, one second, what's the question है? 24. Open करता हूँ. सो t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस अल्फा वी, करेक्ट. ये देखो बेटा, Hmm. जैसे हमने ये यूज किया ना अभी, मैंने ये Hmm. इसलिए बताया था कि जैसे हमने इसको यूज किया, इसी इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन नाउ वील यूज दैट equation which is given to us. Okay, Okay. and we should be able to get that answer, right? Okay. So let's see that what we have right now is, we'll start from here. We have this, we copy that. This is something which we know, and now we know that t is equal to t naught plus alpha v. Now how we can relate, dt is equal to t naught plus alpha into dv, right beta? So Yes. from here you can see that dt, dv can be replaced, dv can be written as t naught, uh, I mean सर ये dt, डिफरेंशिएशन नहीं समझ. t naught क्या बेटा? ये डिफरेंशिएशन में टी नॉट कट हाँ, t जाएगा. naught नहीं है, सॉरी. So I'll just simply get this as dt is equal to alpha into dv. So dv is equal to uh, minus, sorry, dt by alpha, right? यस. So ये dv को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसके साथ. So हम लोग को क्या मिलेगा, cv dt plus p into p by n into alpha into dt. हम्म. ये हो गया cm dt, right? सो ये हो जाएगा कैंसिल. हमको क्या मिल जाएगा, सी एम इज इक्वल टू सी वी प्लस पी बाई एन अल्फा, हम्म. एन यस. अल्फा, ये मिल रहा है. ओके, सी एम प्लस पी बाई एन अल्फा, यस, ये मिल गया. पी बाय एन को अभी टी के टर्म्स में लिख देते, बिकॉज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो पी बाई एन कैन बी रिटर्न एज आर टी बाई वी. So I'll write this as RT by V into alpha. यस. अब इसी को सी एम इज इक्वल टू सी वी प्लस आर इंटू टी को लिख देते हैं टी नॉट प्लस अल्फा इंटू वी बाई वी अल्फा. डन. यस. तो ये हो जाएगा सी वी प्लस आर टी नॉट बाई वी अल्फा प्लस आर आ जाएगा, करेक्ट. हाँ. तो सी वी प्लस आर हो जाएगा सी पी प्लस आर टी नॉट बाई वी अल्फा हो जाएगा. यस. Right? तो हमको ये एक आइडिया आ गया ना, सी एम और सी पी कैसे रिलेटेड है. तो अभी डी क्यू लगाते हैं. डी क्यू इज इक्वल टू सी पी इंटू, सॉरी, सी एम इंटू डी टी, करेक्ट. इसको इंटीग्रेट हाँ. करो, टी वन टू टी टू, जीरो टू क्यू, राइट. So the heat released or required in this case will be equal to Cp plus RT naught by V alpha integral T1 to T2. Correct. सर बट वॉल्यूम में टर्म्स क्या बेटा? दिया. द वॉल्यूम इंक्रीजेस. T1 और T2 का कुछ रिलेशन दिया ही नहीं. टी, इसको वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग लिख देंगे ना. अभी देखो, इसी को जो dt है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं डीवी के टर्म्स में। हाँ। चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ बेटा, सी एम इज दिस। ओके, सी यस। एम को हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं, सिर्फ डी टी को चेंज करना है ना। हाँ। सी एम ये हो गया इंटू डी टी, ये डिफरेंशियल हटा देते हैं, V1 to V2, और हम लोग को रिलेट क्या हुआ, डी वी इज इक्वल टू डी बाई अल्फा, सो मतलब अल्फा इंटू डी वी, बस हो गया। सो क्यू इज ओके। इक्वल टू हाँ। इंटीग्रल V1 V2 सी पी अल्फा इंटू डी वी प्लस इंटीग्रल V1 to V2 आर टी नॉट बाई अल्फा, ये तो सब कॉमन है, इंटू 1/V इंटू डी वी। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया वैसे तो, सो आर टी नॉट। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा ये अल्फा सी पी इंटू वी सर टू हो जाएगा इधर से। प्लस आगे हो गया, हाँ सर हो ये जाएगा। हम लिख दें। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, आर टी नॉट है एल एन V2/V1, सी आ गया क्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट 27, वो भी इसी टाइप। हीट अंडरगोइंग वन एटॉमिक गैस द प्रोसेस शोन इज पी वर्सेस वी। आपको फिजिक्स में हुआ नहीं है क्या बेटा अभी तक नहीं सर। थर्मो? हाँ, ये एक्चुअली फिजिक्स मतलब का क्वेश्चन। थर्मो स्टार्ट हुआ है बट ये सब कवर नहीं पॉलीट्रोपिक, हुआ। ओके ओके, पॉलीट्रोपिक यूजुअली ज़्यादा फिजिक्स में करते हैं, तो ये सारे फिजिक्स में कवर होंगे आपको। अच्छा। अच्छा तो फिर जाने दो, वो फिजिक्स में कवर। नेक्स्ट नेक्स्ट वन। क्वेश्चन, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 30। 30, okay. Inversion temperature is defined upon the temperature above which the gas gets warm and below which the gas becomes cold when expanded, correct? Boils temperature for the gas is 20. What will happen if it is adiabatically expanded at 50 degrees? Okay. TB, boils temperature, is equal to A by RB ना, okay. यस। Inversion temperature is 2 times of TB बेटा, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला की तरह याद करना है, ठीक है। हाँ। ट्वाइस दैट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। आई मीन, तो अभी इन्वर्जन टेम्परेचर कितना हुआ बेटा, इन्वर्जन टेम्परेचर होगा 40। 2 times ऑफ दैट, मतलब 40 डिग्रीज। ओके, सो ये अगर इन्वर्जन टेम्परेचर का लाइन है तो ये दिस इज ग्रेटर देन 40 डिग्रीज, दिस इज लेस देन 40 डिग्रीज। हाँ। ऊपर ऊपर क्या होगा, ये वार्म होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नीचे क्या होगा, ये होगा ऑन एक्सपेंशन, हाँ। राइट। तो क्या इफेक्ट दे रहा है, हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट। फिर 31। An adiabatic cylinder fitted with an adiabatic piston at the right end of the cylinder is divided into equal halves with monatomic gas on the left hand side and diatomic gas on the right hand side. Okay. Fitted with an adiabatic piston at the right end of the cylinder. Okay. ठीक है, तो ऐसा है, यहाँ पर एक मोनोएटॉमिक गैस है, सम गैस एक्स गैस है, यहाँ पे कुछ Y2 गैस है, राइट, और ये इस तरफ पिस्टन है इधर। ओके, सो ये इनिशियली ऐसे है, अभी क्या किया इसने, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, सो वॉल्यूम सेम है इनिशियली, सो दिस इज इनिशियल and diatomic gas on the right side and an impermissible movable adiabatic wall, ठीक है। So, right, if the piston is pushed slowly to compress the diatomic gas to 3/4 of its original volume, okay, this has changed, फिर यही सिचुएशन, थोड़ा सा ये कंप्रेस हो गया, ये गैस कंप्रेस हो गया और ये गैस कंप्रेस हो गया, right. This is what has happened, and now this volume is 3/4 of the original volume, so this is 3/4 of V,
The ratio of the volume of monoatomic gas to the initial volume would be how much? ओके सर, अभी आ जाएगा थोड़ा। आई थॉट कि वो बीच में का वॉल डज नॉट मूव, तो फिर ऐसा था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था मुझे, बिकॉज इफ दे आर टेलिंग कि y इज रिड्यूस टू 3/4, देन शुडंट x जस्ट बी 5/4? तो वैसा एरर हुआ। Okay. अभी हो ठीक है, जाएगा wait. एडियाबैटिक। फिर फिर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड. हाँ, उसके दो फोटोज भेजिए क्योंकि एक डायग्राम भी है उसमें। हाँ. If four identical samples of ideal gas initially at the pressure, okay, initially given here P naught, V naught, T naught, are allowed to expand to double their volumes by the following process: isothermal reversible process. ठीक है, this is process one. Reversible process, P square V is equal to constant. Okay, कोई polytropic process है, और ये है process थ्री, which is adiabatic, और process फोर irreversible adiabatic expansion against constant pressure. Okay, so ये बीच में आता है, हमको पता है ना, हाँ आइसोथर्मल और adiabatic के बीच में आता है, तो ये है प्रोसेस फोर, राइट. और वो हाँ। इरिवर्सिबल है तो कोई प्रोसेस कर्व नहीं रहेगा. यस। और एक पी स्क्वेयर वी, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो यू कैन चेक आउट वन प्रेशर कम होते बढ़ेगा जाए। तो 1/v, तो प्रेशर कम होते जा रहा है. कम कैसे हो रहा है? ये पी स्क्वेयर है ना बेटा, पी स्क्वेयर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/v. सो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होना चाहिए. हाँ, बराबर. सर उसमें डाउट, मतलब सर वो डायग्राम देख सकते हो उसमें, देयर इज नो ग्राफ व्हिच विल करस्पॉन्ड टू वन, क्योंकि सब इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो स्क्वेयर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रोपिक है ना बेटा, तो टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है ना, वो फैक्टर हमने कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे. नहीं सर, बट इट्स पी स्क्वायर वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इनिशियली वॉल्यूम इज वी नॉट एंड फाइनल इज 2 v नॉट, तो फाइनल प्रेशर पी नॉट बाय 4 हो जाएगा। सो एक मिनट, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय V होगा, अंडर रूट, राइट. यस। सो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो प्रेशर तो कम ही होना चाहिए. अच्छा, आंसर इतना ही है क्वेश्चन, कुछ आगे क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ ये नहीं। ऑप्शंस फाइंड करने. हाँ, मतलब सिर्फ वो फर्स्ट फर्स्ट जो डॉट है उसमें ही गड़बड़ था, क्योंकि देयर इज नो ग्राफ व्हिच विल करस्पॉन्ड टू दैट। बराबर. उल्टा करके देखते हैं एक बार. y इज इक्वल टू, फिर भी तो सेम ही आ रहा है ना, 1/p² मतलब सेम है, बराबर. नीचे आना चाहिए बेटा, गड़बड़ किया उसने, इधर कहीं आना चाहिए वो. ठीक है, तो हाँ ये हो जाएगा, ये करस्पॉन्ड टू सेकंड ना, हाँ ये हाँ। सेकंड. तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सेकंड है. ओके। यहाँ से कुछ प्रोसेस करो होना चाहिए, ऐसे या ऐसे, कैसे भी प्रोसेस करो होना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. सर 36 एंड 37। 1 mole of certain ideal gas is contained under weightless piston of a certain cylinder of temperature T. The space of the
space over the piston opens into the atmosphere. What work has to be performed in order to increase the gas volume isothermically under the piston? Eta times by slowly raising the piston. The friction of the piston against the cylinder walls negligibly small. Okay. तो ऐसा पिस्टन है. Increase the volume isothermally under the piston. Eta times by slowly. So देखो बेटा, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर as V naught. Okay, this Okay. I have to change into eta times of V naught. Yes. Right? इतना टाइम हमको बढ़ाना है, तो मुझे इंटीग्रेट भी इसी तरीके से करना पड़ेगा कि ये V नॉट से लेकर ईटा V नॉट तक बढ़ रहा है. करेक्ट. तो Sir, अभी हम but लोग why do we have to integrate? V work is P external, V final minus V initial. नो, दिस इज मूविंग स्लोली. तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल नहीं हुआ, रिवर्सिबल हुआ. Oh, देखो okay. ना, स्लोली करके दिया है ना. हम्म? Hmm. Okay. तो हम लोग को तो ये रिवर्सिबल के जैसे सोचना चाहिए. सो ये Okay. रिवर्सिबल वर्क है, इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी वी नॉट टू ईटा वी नॉट. ये करना है, राइट. Hmm. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो प्रेशर कितना होगा. देखो, इनिशियली ये पी एक्सटर्नल जो है, ये क्या बोल रहा है कि यू हैव टू what work has to be performed in order to increase the gas of the volume isothermally under the piston eta times by slowly raising the piston. Okay, the friction of the piston against cylinder walls is negligibly small. ओके. तो क्योंकि हम लोग ये बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना बेटा, वो अभी वेरिएबल है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना. विथ रेस्पेक्ट टू गैस वो चेंज हो रहा है, और गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर से. करेक्ट. Okay. सो पी गैस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी एक्सटर्नल. बहुत स्लाइटली स्मॉल रहेगा. तो यूजुअली वी रिप्लेस दिस एज पी एक्सटर्नल. करेक्ट. Hmm. आई मीन, बट ये चीज़ हमको दिया है. Sir, how did you come to the conclusion कि बाहर का pressure change हो रहा है? बाहर का प्रेशर. ओके. Change हो रहा है P external. पी एक्सटर्नल अगर चेंज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट स्लोली मूव करेगा ही नहीं ना. हाँ. Okay. हाँ. इट But इज लाइक ए स्प्रिंग बेटा, बाहर एक स्प्रिंग की तरह है. hmm. अंडरस्टूड. जैसे जैसे एक्सपेंड होते जा रहा है ये बढ़ते जाएगा. Hmm. Okay. ठीक है. तो आप ऐसे सोचो. ठीक है, आप दो तरीके से सोच सकते हो इसको. या तो आप ऐसे सोचो कि कोई भी इंस्टेंस पे पी एक्सटर्नल पी गैस के ऑलमोस्ट सेम है, राइट. सो पी गैस इंटू डी वी वी नॉट टू ईटा वी नॉट. करेक्ट. और Hmm. माइनस पी गैस कैन बी रिटन एज एन आर टी बाई वी इंटू डी वी वी नॉट टू ईटा वी नॉट. राइट. विच इज Yes. इक्वल टू माइनस एन आर टी यहाँ पे आ जाएगा कॉमन. एन आर टी कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल वी नॉट टू ईटा वी नॉट वन बाई वी डी वी. तो ये आ जाएगा अपने को एल एन के टर्म्स में.
ओके, तो वन Yes. मोल बोला है तो एन वन हो गया, सो यू विल गेट दिस एज आर टी एल एन eta v naught by v naught, so we'll get this as rt ln eta, rt ln eta, करेक्ट। हाँ, हाँ बट इसमें मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट, इसमें अच्छा हमने, नेगेटिव साइन दिया है ना? हाँ विथ नेगेटिव साइन, राइट, विथ नेगेटिव साइन बराबर। इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ कहाँ पर है कि इनिशियली जो प्रेशर है हम लोग का पी नॉट है बराबर, इनिशियली कोई पी वन हाँ, प्रेशर लेते हैं, राइट, और वो फाइनली प्रेशर जो है वहां पे जाके रुक जाएगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना चेंज हो रहा है नहीं बताया इसने। वन राइट। ऑफ सर्टेन आइडियल गैसेस कनेक्टेड अंडर अ वेटलेस पिस्टन ऑफ व्हाट, ये पहले भी किसी ने पूछा हुआ था मुझे, व्हाट इज द सिलेंडर, ओके, द स्पेस ओवर द पिस्टन opens into atmosphere, perfect, what work has to be performed in order to increase the gas volume isothermally under the piston eta times by slowly raising the piston, the friction of the piston against the cylinder walls is negligible, small। ठीक है बेटा, ये है तो यही आंसर, ठीक है, इसमें एक गड़बड़ है जो नॉर्मली हम लोग एक्चुअली फिजिक्स में कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, हम्म। सेम क्वेश्चन फिजिक्स में क्या, जस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है, फिजिक्स में क्या करेंगे, ये सोच के कि बाहर प्रेशर, सपोज इनिशियली दिस इज पी नॉट, ओके, और Okay. एट एनी टाइम पी, लेट मी टेक इट एज पी टी, दिस इज एट एनी टाइम टी, करेक्ट, Yes. तो पी एक्सटर्नल हमेशा होगा, ओके, पी नॉट माइनस पी टी, राइट, एट एनी टाइम पी, ओके, हाँ, इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टी, जो डिफरेंस है ना इनमें, मतलब एट टाइम टी इनिशियली पी नॉट है, ओके, अभी ओवर द टाइम थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा ना, हम्म। सो दैट मच अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड, ओके, ओके। मतलब उस टाइम पे रहेगा, तो ये वर्क को ऐसे रिलेट करेंगे, माइनस पी नॉट माइनस पी टी इंटू डी वी वी टू ईटा वी नॉट, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस पी नॉट इंटू डी वी, विच इज आई राइट इट एज वी टू ईटा v माइनस वी, और ये प्लस पी पी टी, प्लस पी टी को हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी, इंटीग्रल ईटा टू, इंटीग्रल वी टू ईटा वी इंटू डी वी, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस पी नॉट वी इंटू ईटा माइनस वन प्लस एन आर टी, ये कॉमन आ जाएगा एल एन ईटा, ये आ गया। हाँ। अब ये जो पी नॉट वी है उसको हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी, करेक्ट, क्योंकि वो तो इनिशियली सेम ही है, सो और वन मोल है तो ये मैं आर टी लिख सकता हूँ इंटू ईटा माइनस वन प्लस आर टी एल एन ईटा, करेक्ट, सो दिस विल बिकम माइनस आर टी ईटा माइनस वन प्लस एल एन ईटा, करेक्ट, सो सॉरी, ओनली आर टी,
माइनस आर टी ना, सो माइनस कॉमन निकाला तो ये भी बाहर अंदर माइनस आ जाए, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, दिस इज कंसिडरिंग हाउ पी एक्सटर्नल कैन बी रिटर्न। दिस इज अ फिजिक्स क्वेश्चन विच इज सपोज टू बी डन लाइक दिस। केमिस्ट्री में हम अच्छा लोग क्या कर, हम्म, अच्छा ओके। समझ में आया ना। सो हाँ। केमिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग ये हमेशा लिख सकते हैं कि पी एक्सटर्नल पी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी आई कैन राइट इट एज पी टी एंड पी टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पी एक्सटर्नल ऑल द टाइम। तो हम लोग हम्म। ये अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट फिजिक क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी मोस्ट फिजिक्स टर्म में पूछा है तो पी एक्सटर्नल आप ऐसे लिख लेना, विल गेट दिस। ओके ठीक है, सर, बट इधर ऑप्शन में दोनों आंसर्स है तो कौन सा मार्क कर, मतलब एग्जाम में आया तो ये मार्क करना, विश। ये ओके। मार्क करना, बिकॉज दिस इज विदाउट अप्रोक्सीमेशन। करेक्ट। ये फिजिक्स में सिखाएंगे ना? हाँ बेटा, और आपको मतलब जब भी होएगा ये तब बताएंगे आपको। सर और पेज शुरू हो गए। कितना हो रहा है, 8 बज गए। हाँ सर। क्या क्या बच्चे हैं आपके, कितने क्वेश्चन है, नंबर बता दीजिए मुझे। अबाउट 20, नो अबाउट 25। और क्वेश्चंस है? हाँ, और आर्य के भी है थोड़े। ओके, सर तो आज रात कर सकते हैं। आज रात नहीं होगा, कल सुबह करते हैं, कल सुबह फ्री हूँ। अच्छा ओके सर। ठीक है, सेम 6:30। हाँ सेम 6:30 विल कंप्लीट। ओके। ठीक है बेटा, चलो। बाय।